मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो अबाउट योर व्यूज कि आपको ये लेसन्स किस तरह के लग रहे हैं। दूसरी चीज है कि जो मेरे सैटरडे के सेशन हैं वो एवरी सैटरडे हैं सिर्फ, जिसमें मैं आपको इनवाइट करती हूँ, ठीक है। तीसरी चीज है कि ये जो लेसन्स हैं ये अपडेटेड जो भी रिसर्च होती है उसके ऊपर बेस्ड हैं। और मैंने कुछ लाइक आई थिंक फ्यू वीक्स अगो आई पोस्ट वन क्वेश्चन इन कम्युनिटी, जिसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आपको इंग्लिश बोलने में किस तरह की दिक्कत है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस and when we speak we forget vocabulary. So that's the reason you easily forget vocabulary, because you are memorizing the vocabulary. So उसमें memorization, जैसे मैं बार बार आपको कहती हूँ कि memorization जो है वो सबसे lower level का skill है, जो कि memorization में कुछ चीजों के लिए हमें memorization चाहिए, बट नॉट फॉर एवरीथिंग। सो अगर आप सिर्फ कुछ सेंटेंसेस को मेमोराइज करके सोचो कि मैं इंग्लिश बोल लूं, या आप वोकैबुलरी को मेमोराइज करके सोचो कि मैं इंग्लिश बोल लूं, या आप ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेमोराइज करके सोचो कि मैं इंग्लिश बोल लूं, तो वो देखिए बहुत मुश्किल है। ओके, सो इसीलिए मुझे पता है कि there is no any channel who is providing you these kind of lessons, because these lessons are just, जिस तरह से I will say कि 80% मैं कहूँगी, 100% तो नहीं हो सकता because you are not in a physical class setting, तो 80% मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस तरह से मैं आपको टीच कर सकूं। सो इसीलिए ये जो लेसन्स हैं वो आपको, जैसे फैमिली का ही हमने स्टार्ट किया है, तो वो अभी फैमिली के ऊपर ही चल रहा है, राइट। तो उससे क्या होगा, देखो इसमें आप इतनी लैंग्वेज सीख रहे हो साथ में। ये नहीं है आप सिर्फ एक वर्ड पे फोकस मत करो कि ओ फैमिली, ओके अगेन दिस लेसन इज ऑन फैमिली, ओके अगेन दिस लेसन इज ऑन फैमिली। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, because in every lesson you are learning new information and you are also reviewing something you have learned, right? You might know already some of the information and the information we are practicing here. So every day देखो, तो अगर आप सोचो तो आप कुछ ना कुछ बहुत सारा नया सीख रहे हो। और उसमें क्या है कि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें सारे ही स्किल्स आ रहे हैं। आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, एंड इफ यू आर टेकिंग नोट्स एंड यू आर प्रैक्टिसिंग, आपकी राइटिंग भी होगी साथ साथ में। तो अभी जैसे हमने सिर्फ अभी रिलेशंस के बारे में ही बात की है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द जेनेटिक्स। अब देखो ये साइंस आ गई इसमें, तो आप सोचोगे कि ओके मुझे तो सिर्फ यही जानना है कि ओके मदर है, फादर है, सिस्टर इन लॉ है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि जब हम फैमिली की बात करते हैं वी टॉक अबाउट फैमिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स, वी टॉक अबाउट फैमिलीज डिस्क्रिप्शंस, हाउ दे लुक, हाउ दे बिहेव, हाउ दे एक्ट, राइट। तो वो सारा ही जो है उसके ऊपर हमारा है। तो आज की जो हमारी जो क्लास है, सबसे पहले हम जेनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे कि जेनेटिक्स की वोकैबुलरी जो कि आप ट्रेट्स लेते हो अपनी फैमिली में। अब जैसे होता है ना, किसकी शक्ल मिलती है, किसी की नेचर मिलती है, वो क्यों होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, सो गुड इवनिंग मुकेश। ऐसे Ahmed Hassan. Okay, so hi Ahmed. So now I am going to share my PowerPoint, and then we will talk about the genetic terminology and some of the family traits. So again, इसकी English क्या है? Okay, see, this is the way
यही प्रॉब्लम है। आप ये जो हिंदी में इसकी इंग्लिश क्या है, इसकी इंग्लिश क्या है, अगर आप इस तरह से इंग्लिश सीखोगे ना तो आप सारी उम्र इंग्लिश सीखोगे और थोड़ी थोड़ी बहुत कम इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज। मैं बिल्कुल ट्रांसलेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं कहती हूं कि ट्रांसलेशन जो है उसको यूज लाइक क्रचेस, क्रचेस होते हैं ना, जिस तरह से आप किसी को कोई इंजरी हो जाए तो यू आर नॉट एबल टू वॉक एंड यू यूज क्रचेस, राइट। उनका सहारा लेके आप थोड़ा सा चलते हो तो उनका आप सहारा लेते हो। उस तरह से है कि इसको सपोर्ट के तौर पे यूज कीजिए। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसकी इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो प्लीज यूज इट जस्ट लाइक अ सपोर्ट। जिस तरह से कि मैं आपको कई बार टीच करती हूँ तो थोड़ी सी जहां पे मुझे लगता है कि ये आपको समझ नहीं आ रहा, देन आई ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन योर लैंग्वेज। बट व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग वर्ड टू वर्ड इन इंग्लिश or in your language, or yes, word to word translation from English to Hindi or Urdu or whatever is your regional language, or if you are translating everything from your regional language to English, you cannot justify it। और उसमें क्या है कि आपकी लैंग्वेज इंप्रूव इतनी सी होगी, बहुत कम। अगर आप इस तरीके से इंग्लिश सीखते हो कि इंग्लिश टू इंग्लिश सीखो, उसमें सपोर्ट के तौर पे ट्रांसलेशन को यूज करो, देन इट्स मोर बेनिफिशियल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द lesson which I'm going to share with you, because I recently someone sent me on a WhatsApp like 4 or 5 sentences, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं this and that, I mean इसकी इंग्लिश क्या है। उसमें बहुत सारी ट्रांसलेशन में आपके इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं। वो मैं ट्रांसलेशन का एक पीस है, मैं दिखाऊंगी किसी दिन आपको, वो किसी स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा था, और उसमें आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ट्रांसलेशन को। प्लीज उस तरीके से इंग्लिश मत सीखो अहमद हसन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आई वॉज जस्ट सेइंग, राइट। तो उसमें अगर आप इसको क्या, कहाँ पे किस तरह से यूज करोगे, राइट। सो I don't know. I mean, it doesn't make sense to me. I also learned English as a second language. As you know, I grew up in India. I had my education from India. I did my PhD also from India in education. But इस तरह से आपको मैं बता रही हूँ कि आप इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो सकते आप अगर इस तरह की ट्रांसलेशन में पड़े रहोगे तो, because based on my experience, my education, my exposure, my English learning experience, it's a complete wastage of time जब आप एक एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ते हो तो। ओके, सो आज का जो हमारा है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप बड़ी लिमिटेड एरिया पे फोकस करते हो अपने आप को, तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स अगेन, बहुत ब्रॉडली सोचना है। तो ब्रॉडली सोचने के लिए आपको एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन नहीं करनी है, वो आप अपने दिमाग में रखो उस चीज को। ओके ओके, सो फैमिली ट्रेट्स, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। नाउ वर्ड ट्रेट, ट्रेट क्या है? सो एनी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेट that can be passed from parent to offspring। अब offspring क्या है? बच्चे, right? So any characteristics, any qualities, any जो जिसको आप हिंदी में कहते हो कि जो उसकी कोई विशेषताएं हैं या उसके जो फीचर्स हैं, उसमें क्या है? हेरिडिटी में क्या आ जाता है? हेरिडिटी में पैसिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सो ट्रेट है कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। कोई देखने में किस तरह से लगता है, किसके साथ किसकी शक्ल ज्यादा मिलती है, या फीचर ज्यादा मिलते हैं, या बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा मिलता है, वो आ गए फिजिकल ट्रेट, राइट। वो सारे फिजिकल हैं कि आपकी लुक में या आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं जो उसमें किसके साथ आपका रिजेम्बलेंस है, राइट, ज्यादा मदर के साथ है, फादर के साथ है, या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी के साथ है, तो दैट इज योर ट्रेट्स, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ हेरिडिटी क्या है, जो हमारी जो जनरेशन से पास होती हैं चीजें, राइट। सो जेनेटिक्स रिलेटेड टू जीन्स और हेरिडिटी, जेनेटिक्स, जीन्स इन अदर वर्ड्स, राइट। अब उसमें आई कलर्स हैं। अब आई कलर्स में बहुत से कलर आ जाते हैं, किसी की ब्राउन आईज हैं, किसी की ब्लैक आईज हैं, किसी की ब्लू आईज हैं, किसी की ग्रीन आईज हैं। और कोई कलर हो तो मुझे बताना, बट दीज आर द कॉमन कलर्स, राइट। एंड देन वी हैव स्किन कलर्स, राइट। देयर आर 5 मेन स्किन टोन्स जो कलर्स हैं, फेयर, राइट, मीडियम, वार्म, टैन एंड डार्क। सो यस, हम कह देते हैं, अब खास करके इंडिया के अगर मैट्रिमोनियल्स देखो तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ फेयर ब्राइड, राइट, बिकॉज इंडिया में कलर का बहुत ज्यादा वो है, जो कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज में उसको कंसिडर नहीं किया जाता। सो एनीवेज, देन इज अ हेयर कलर। सो हेयर कलर कुड बी ब्राउन, ब्लॉन्ड हेयर, आगे मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी कलर्स की कि किस तरह का कौन सा कलर है। तो ब्राउन, ब्लॉन्ड हेयर पर्सन, ब्लैक, रेड, ग्रे, white, right? So then texture of the color, hair, texture भी हैं आगे उनके कि वो किस तरह के हैं, जैसे कि वेवी हैं, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, राइट। देन हाइट, हाइट किसी की, कोई शॉर्ट है, एवरेज हाइट है, टॉल है। अब टॉल और एवरेज डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हो, उसके अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करता है। वेट, वेट में कोई थिन है, कोई एवरेज वेट है, कोई हैवी है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो फैट वर्ड है दैट इज नॉट पोलाइट वर्ड, ओके। सो ज्यादातर हम किसी को फैट नहीं कहते, यही कहते हैं कि कोई हैवी है, ओके। सो लेट मी सी व्हाट यू आर आस्किंग मी। So the next one is next one. So let me see the chat here, what you are asking. Can I ask you, I don't know, MCQ, what is MCQ? Two preposition is used together in a sentence. what you're talking about. Any characteristics that can be passed from parent to offspring. Passing of physical or mental traits from parent to offspring. Yes, it's correct. Okay, so now let's move on to, see, I don't know how you guys are learning English and who is teaching you the way you are learning. Hello, Rembex Ravel, hello. So you can see here the hair colors. In first picture you can see brown, then it's blonde, then it's black, then it's red, gray, white, right? So if you look at my hair's gray because it's a mixture of black and white, right? So that's gray. And then white is then when it's a completely white, 100% white. Now you can see the length of the hair, short hair, long hair, medium length, straight hair, curly hair, and wavy hair. So wavy, right? Curly. So you see how many words are there only for hair colors, right? Or the length of the color, or the texture. So ये आ गई क्या? Hair colors. ये क्या आ गया? Length, right? Length, short length, long hair, short hair, long hair, medium hair, right? And then we have a texture. Texture,
TEXTURE, texture of the hair. So उसमें क्या है, किसी के straight hair हैं, किसी के curly hair हैं, किसी के wavy hair हैं, right? तो इस तरह से hair. Okay. Now let's the height and weight. So height में क्या है, short height, average height, tall height, right? And then weight is thin, average weight, or heavy. Now, when I talk about height, it depends on the countries also, right? अगर आप बहुत सारे countries हैं जहाँ पे लोगों की short height होती है, जैसे for example चाइना में, या और भी कोई countries हो सकते हैं, तो यहाँ जैसे अमेरिका में अगर आप देखो तो बहुत जो अमेरिकन्स हैं वो बहुत tall हैं, उनकी जैसे 6 feet is a very common height, 6 to 6 like 6 में तो बहुत ही common है, तो अगर जो 6 से थोड़ा सा भी नीचे हैं तो they are kind of like a short, right? So अगर उससे 6'2" से ऊपर हैं तो उनको tall मानते हैं, तो अगर इंडिया में कोई 6 है तो उसको tall मानते हैं. So it all depends on कि कहाँ पे जो acceptable, like उसका जो measurement है वो different तरीके से उसको use किया जाता है कि short है, average height है या tall है. Now eyes color, blue, brown, black, blue, and green. So 4 colors जो हैं very common in what you say, eyes. Okay, so now let's see what we're gonna talk about, the family traits. Okay, so hello Rembex, hello Vana, good to see you everyone. Oh, you have brown hair. Okay, yes, you can tell me about yourself, please. If you have short hair or your, what you say, eyes color. Yes, eyes का color क्या है आपका? और hair, or yes, I have brown hair. Okay, Vana, what about you? And what about your height, Rambex? Are you tall? You are short? Your medium height? Anyone? Yes. Okay, so now we will be reading one short reading about traits. What are family traits? Okay, and then it all depends on time, how much time I have, and wherever my time will end by 6, I will stop the class. As you know, I am here for 30 minutes morning time. So I'm going to share the reading with you. Okay, what are family traits? Family traits are ways in which family members are alike. Now, alike. What is alike means? Same. Same. So in other words, you can say similar or alike are same. Okay. So same, similar, alike. एक ही meaning है इनका. So family traits are ways in which family members are alike. Okay. So okay, Gina. You may have the same color hair as your mother. You may have same color eyes as your father. Eye color and hair color are family traits, right? Now, another family trait is how tall you are. Another. So another means or, kaun se. Traits like these are passed on through families, right? So here you can see all your parts of speech or grammar or vocabulary, how you are using it, right? So unke through, kiske through? ये जो traits हैं passed on through families.
थ्रू फैमिलीज, अब वो जीन्स में है, राइट? जो जीन्स हैं वो हमारी जो है वो पैस ऑन होते हैं अब नेक्स्ट जनरेशन को. You inherit or get these traits from your parents and your grandparents. So you will pass on these traits to your own children. Now, let's talk about inherit. Now, you inherit from your parents. You inherit from your parents what? You inherit your parents' genes. And yes, you inherit from your parents sometimes property also, right? Money or house or jewelry, that's also inherit, right? कि वो मिलती हैं आपको. But इसमें inherit क्या है? इसमें आपको जो genes में inherit करते हो आप. Genes में that, so in other words, inherit means, look at this, inherit means get, right? So you see, this is called context clues. अगर आपने कहीं सीखा हो कि context clues क्या होते हैं, so context clue में एक example ये है कि जब writer लिखता है तो वो आपको उसकी जो definition है वो भी बता देता है sentence के ही अंदर. So this context clue is a definition context clue. Okay, so you inherit or get. So inherit का मतलब है कि आप you get it, you receive it. These traits, what we are talking about? Because we are talking about traits. So traits like these are passed on through families. So you inherit or get these traits. Why we are using these here? Why it's these? Why not it? Because we are talking about what? Traits. And traits are more than what? More than one, right? So traits. So if I say trait, then here I can say it, because then it's going to be a singular noun, right? Okay. So traits like these are passed on through families. So you inherit or get these traits from क्या मतलब किससे मिलते हैं? From who? So from your parents and your grandparents. So किससे मिलते हैं? From your parents and your grandparents. So you will, now you received it, you got it from your parents or your grandparents, and now when you will have your children, you will be passing on those traits, some of the traits, maybe all the traits, to your children, right? So that is, the traits are passing on in each generation, right? So इसीलिए जो हमारे जो फीचर्स हैं, या कई बार इवन मेंटल, जो इट्स नॉट ओनली फिजिकल ट्रेट्स, कई बार मेंटल ट्रेट्स भी मिलते हैं आपके, जिसको कहते हैं ना, आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो स्वभाव भी मिलते हैं. कई कहते हैं, कई बार बहुत बार मैंने सुना है, कहते हैं वो अपने पापा की तरह गुस्से वाला है, राइट? उसको अपने दादाजी की तरह गुस्सा आता है, समथिंग लाइक दैट. So that's very common. So that means you get your physical traits as well as your mental traits also from your parents or from your grandparents, right? So उस तरह से ये जो traits हैं वो pass on होते हैं हर generation में. Now, वो क्यों pass on होते हैं, किस तरह से pass on होते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. तो उसके लिए so now I'm going to share one more slide with you, and then I will conclude this lesson for today. Okay. So now look at this picture. Do children always look like their parents? Sometimes children do not look like their parents. For example, parents with brown eyes can have a child with blue eyes. This happens
with other animals and even plants too. So look at the chart below. It shows that 2 green birds had 4 chicks. Now you can see here, 2 green birds. They have 4 chicks. 1, 2, 3, 4. The 3 of the chicks are green, right? And 1 chick is blue. So you can see here. But if you notice, both birds are green, right? But their chicks क्या है? Babies. उनके chicks जो हैं वो babies हैं. So these birds, they both are green. Both are green, right? Both का क्या मतलब है? दोनों, both. So they both are green, and their chicks, 3 of them, them is an object pronoun, right? And we are using it for plural form. So 3 of them are green, and one of them is what? Blue, right? Okay. Now, how can a chick inherit blue feather when its parents' feathers are green? So many people wondered about this question. One of these people was a man named Gregor Mendel. So Gregor Mendel is the person who found out that how this happened. Okay, so he did a lot of research about it, and that's what we will be learning in our next lesson. Okay, so let's see. Let me ask you if you remember, what did we learn today? So we learned about that the genes pass on to the next generation, right? If we summarize it, then we can say the genes pass on to the next generation. So we get, or what is the another word for get? If you remember, inherit, right? So we inherit the genes from our parents. Now I am summarizing it, or in other words, if I'm going in detail for each and everything, then I paraphrase it. But when I talk briefly about it, that is a summary. So I know many people in India memorize the summaries from their MBDs. I remember when I was in school, we used to have MBDs. I don't know what is now, but that's not the good way to summarize. So what we learned that the traits, physical traits and mental traits, they pass on to the next generation. So we inherit the traits from our parents or grandparents, and then we will pass on the traits to our children. That's what we were learning. So in some cases, some children do not look like their parents. So why did it happen? So the man named Mendel, if you didn't remember the whole name, you just can say, or you can say one researcher, he was also wondering, so he found out why it happened. So that's what we were learning. So now in next lesson, we will talk more about this research, and then you will know why we have these kind of differences, like why sometimes we do not get the same features from our parents or from our grandparents, why sometimes some of the children do not look like their parents. Okay, so that's what we will be learning in our next lesson. Hi, so I have, ma'am, you always give online. Yes, Rambex Raval, I am here. Indian Standard Time is 4 p.m., 4 to 4:30 or 35 maximum. Yes, I teach 30 to 35 minutes morning, Monday to Friday. And then every Saturday, I provide 100% free class on Zoom, where I invite students
they can join my class, and that class lasts about 2 hours. Okay, so ज़्यादातर 2 hours के लिए I teach that class. Okay, so and for that you need to WhatsApp me on my number, and my number is everywhere on my channel, and then I send you the Zoom link Saturday morning, because my class is every Saturday evening. But every time, if you want to join the class, you receive the new password for my Zoom class, because I do not want to keep the same password. The reason is because sometimes I see students are very like, they want to join the class and then they don't come. And then I see if someone is not joining the class for 2 or 3 weeks, then I will not send the message to that person, because right now I have about 300 students in my list. Okay, and I have 100 students capacity in Zoom. So that's the reason, because I want to send the link to those who really want to join the class, right? But again, Saturday's class is just a class where you can come and get the opportunity to talk to me, to talk with me, and then also you can get rid of some of your hesitation. If you are hesitant, or if you are scared to make mistakes, or if you are scared to speak, that's what I always encourage you. Please try it, because if you will be always scared that, oh, I don't know if I'm going to speak something, I might gonna say it wrong, then you are blocking yourself from learning. Okay, it's okay to make mistakes. I'm not saying celebrate your mistakes. No, I'm not saying that. And we all make mistakes. What do you think? I never make mistakes. I might do it when I'm teaching here, because I'm not using any script or anything. Whatever I have here is right there, right? So that is the same thing in a real life situation. When you talk to people, you don't use scripts, you don't use books, right? So that's the reason I'm saying that memorization is not a very effective method to learn language. Okay, so you have to speak it from your heart. Okay, whatever you have in your treasure, your brain, your all skills, because if you are learning and you are practicing it every day the way we are practicing, you will definitely improve your English. But if you are stuck in translation, 100% translation, and then you are stuck in learning things in isolation again, that means कि मुझे आप see, मेरा जो observation है आपके लिए 99.9% students, so that is very close to 100%, right? मैंने सिर्फ 0.1 का मार्जिन रखा है. तो most of you, will say, most of you want to, you have your own mindset कि आपने इंग्लिश किस तरह से सीखनी है. आप उसी माइंडसेट को लेके आते हो और उस माइंडसेट के साथ आप स्टिक हो. और उसको मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रही, बिकॉज आपको वो इन्वायरमेंट में, उसी इन्वायरमेंट में आपने उस तरह से सीखा है, तो आपका वो उस तरह से माइंडसेट हो चुका है, बन चुका है. वो उसको आपको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो, राइट? अगर मैं फिर कह रही हूँ, एज एन एजुकेटर मेरे लिए वो सबसे इजी है. अगर आप कहो ना, अगर एज अ टीचर मेरे लिए वो सबसे इजी है जो मेथड से आप सीखना चाहते हैं. Really, it's a piece of cake for me. Why? Because I can bring maybe 10 lessons every day for you, like those. ये grammar सीख लो, ये questions सीख लो, ये पढ़ लो, ये sentences की translation है, ये इतने sentence हैं, इनकी ये translation है. उसमें क्या time लगता है उसमें? You know, I can have all the sentences in English, and then I can go to Google and I can translate in Google. I can translate in Hindi, I can translate in Bengali, I can translate in Urdu, in any language, right? और उसमें क्या होगा फिर, क्योंकि अगर स्पेशली हिंदी है, पंजाबी है, आई नो दैट लैंग्वेज, तो उसमें अगर कोई एरर्स भी हैं तो उनको मैं फिक्स कर सकती हूँ. तो वो मैं आपके लिए रोज के 10 सेंटेंसेस या 20 सेंटेंसेस लेके आ जाऊं, तो वो तो मेरे लिए तो बहुत इजी काम है.
मेरे लिए तो बहुत इजी है। मुझे क्या, व्हाई आई नीड टू वर्क सो हार्ड एंड यू नो ट्राइंग टू क्रिएट द लेसन। समटाइम आई do the research and find out some of the articles where I can find out the information and put it together कि अब जैसे ये फैमिली पे है तो मैंने इतना कुछ सारा इकट्ठा किया कि इसमें क्या क्या मैंने आपको टीच करना है। तो that's why Rambex, tomorrow's class is 8:30 and for that you have to send me the WhatsApp number if you want to join my class. And if you just want to watch it like this, you can be here 8:30 Indian Standard Time, जो रात का टाइम है, right? Okay. So I hope you understand. मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि समझो प्लीज। ट्रांसलेशन के लिए अगर आपको ये, अगर देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन पूछनी है तो उसके लिए हजारों नहीं शायद लाखों यूट्यूब पे वीडियोस हैं लोगों ने डाली हुई ट्रांसलेशन की। हिंदी की ट्रांसलेशन इंग्लिश से इस सेंटेंस, हाँ मतलब मुझे नहीं लगता कोई किसी ने कोई सेंटेंस छोड़ा है ट्रांसलेशन करने के लिए यूट्यूब पे। इतने इंडिया में आई विल से मे बी मोर देन 90% चैनल्स पे आपको ट्रांसलेशन ही मिलती है। तो आप वहां से क्यों नहीं ट्रांसलेशन देखते, आप वहीं से देखिए। मुझे ट्रांसलेशन मत पूछा करो क्योंकि मेरा वो मेथड नहीं है टीच करने का और मैं उस तरह से टीच नहीं कर सकती आपको। प्लीज समझो इस चीज को। मैं हिंदी बोलती हूँ, हिंदी जितनी मुझे आती है बिकॉज माई फर्स्ट लैंग्वेज इज पंजाबी, बट उसमें है कि हिंदी में अगेन मैं कह रही हूँ, मैं बार बार कहती हूँ आपको कि हिंदी को मैं कहती हूँ कि उसको सपोर्ट की तरह यूज करो। अगर आप कहो कि मैम हमें तो, अरे मैं भी पंजाबी मीडियम में पढ़ी हूँ। स्कूल में मेरा मीडियम फर्स्ट पहले पंजाबी ही था, उसके बाद yes my English is strong, my English was strong in school too. Why? Because I had a passion to read books. मैंने बहुत रीडिंग करने का अभी भी मुझे शौक है, तो उसकी वजह से। और रीडिंग मैंने हर लैंग्वेज में की है, पंजाबी में, हिंदी में मैंने बहुत रीडिंग की है, इंग्लिश में, तो उसकी वजह से माई स्किल्स वर स्ट्रॉन्ग। एंड बाकी ये है कि वी ऑल have a different learning के जो हमारे styles हैं वो different हैं। और I was always learning कि I have to discuss and I'm more visual or more like reviewing the information. I never memorized. So उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप भी मेमोराइज मत करो, अंडरस्टैंड करो। और दूसरी चीज है कि डरो नहीं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, इवन जब मैं अमेरिका में आई थी मेरे लिए बहुत कुछ नया था, यहाँ पे बहुत चैलेंजेस थे, राइट? तो बट आई एक्सेप्टेड दोज चैलेंजेस, आई वाज कंसिस्टेंट कि मुझे सीखना है। आई हैड माय हायर एजुकेशन फ्रॉम हियर आल्सो, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई डिड माय डिग्री इन इंग्लिश। सो उसके लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ता है, राइट? अगर आप ये सोचो कि आप रिलैक्स होके पैसिवली यूट्यूब की वीडियोस देख लो और कुछ करो नहीं, और आप सोचो कि आप फ्लुएंट बन जाओ, तो प्लीज, आप सुनना नहीं चाहते पर मैं आपको सुनाऊंगी कि उस तरह से आप इंग्लिश, बहुत चैलेंजिंग है वो फिर आपके क्या होता है, आप सोचते हो मैंने इतनी वीडियोस देखी, मुझे तो इंग्लिश आई नहीं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, राइट? तो व्हाई नॉट टू लर्न द बेस्ट अपडेटेड रिसर्च बेस्ड मेथड्स, जो कि यहाँ पे मैं आपको 100% फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ। माई टाइम इज प्रेशियस, ओके? अगर मैं उस तरीके से सोचूं, बट मेरे को है, व्हाई आई एम डूइंग दिस इन हिंदी ऑल्सो। I can do this channel, I can run this channel in English only. I don't need to translate in Hindi, right? Then I can have more students internationally, right? If my channel is 100% in English, then from every country, the students can join my class. But I'm doing this in Hindi also because I really want to help the students from my native country, right? Because I'm Indian American. तो मेरी जो कहते हैं ना कि अपना जो कंट्री है वो दिल में हमेशा रहता है। सो उसलिए मुझे है कि मैंने स्ट्रगल देखी हैं स्टूडेंट्स की इंडिया में, मैंने मेरे खुद के रिलेटिव्स में हैं स्टूडेंट्स कई, तो मैं उसलिए मेरे को है कि नहीं, मैं आपकी हेल्प करूं।
So that's the reason I'm here. But if you do not want to avail the chance, it's up to you, right? So I cannot force you. I can advise you, I can suggest you, but I cannot force you. It's all up to you. So now today it's like almost 40 minutes. Okay, guys. So I will see you tomorrow, 8:30. And if you are interested, and if you are new to this channel and you are not aware of it, I teach a free Zoom class where you are going to be in my class and you will be interacting with me and learning the language. And we will have, again, maybe a story or an article or something, and we're going to read and we're going to discuss about it. Okay. So again, have a wonderful day and stay blessed.